you have to select को एरिया रे स्टडी करिवो तोर एरिया ऑफ रिसर्च कोन है ना को एरिया रे स्टडी करिवो कहा ऊपर स्टडी करिवो है ना सेटा को तुम आइडेंटिफाई करिवो देन सेटा करि सरला परे यू हैव टू कलेक्ट डाटा तापर तुम डाटा कलेक्शन करिवो data you have to collect data from the respondents data collection karibo after data pare you have to analyze the data you have to analyze the data ko analysis karibo classification karibo tabulation karibo tapare taku data analysis karibo so analysis pare you have to write a report so these are the different steps involved in social research so research therefore to have valid and reliable data you have to proceed through these steps of social research so the term as a research when we say I mean the research is a process will coach research it is a process it is an ongoing process process mane kono it is continue for some period some time it is a process will go so process as a process research includes a technique a combination of various techniques and a methodology ये सब को include करे research. The entire research process is guided by the methodology and carried out with the help of methods and techniques. Research टा तार method और technique ये दिटा होची important for social research. है ना? So technique is an apparatus. है ना? It is a way used for eliciting information from the respondent. तमे कौन टेक्निक यूज करिकी तुमे रेस्पोंडेंट रू डेटा कलेक्शन करिवो so that is your lookout है ना तो टेक्निक गोटे दरकार रिसर्च प्रोसेस रे then you have to sometimes you may combine various techniques along with the procedure rules of carrying out research constitute a research method you have to choose a method गोटे मेथड करिवो जा द्वारा तुमे केते गुडे टेक्निक कॉम्बिनेशन ने गोटे प्रोसीजर रूल फॉलो करी carry karibo research then only you have to methodology a wide range of methods and techniques and their theoretical logic with these are used scientific method aims at establish a value proposition a methodology madhyam to gote value proposition karibo and that will help us to understand it then ei jo entire research process eta ei methodology द्वारा এবং guided by the methodology or technique or method द्वारा guided habo है ना so that we will be able to collect information about that. So, is your block for various methods and technique of social research? What are the various methods and research? So, there are types of research. I mean, type of research. Now, research is a systematic study on a particular issue or a chosen topic and by which you arrive at a certain valid conclusion is a chosen topic तुमे जो टॉपिक ऊपर चॉइस करिवो कोन तमरो नीड जातिवो सेही ऊपर तुमे गोटे सिस्टमैटिक स्टडी करिवाटा को हम रिसर्च बोली कहउछी सपोज हमर वर्तमान गोटे बर्निंग टॉपिक होची माने कोरोना सो कोरोना गोटे हम सिलेक्टेड काहे कि कोरोना लोक माने अफेक्टेड होचंती कोरोना रे एते बा तंगर डेथ रेट काई अधिका होची सो सेटा ऊपर गोटे कंडक्ट करि परिया रिसर्च बा गोटे जो हमरो क्लाइमेट चेंज ताको गोटे हम इशू तो इट इज चूजन टॉपिक तमे गोटे निर्दिष्ट टॉपिक ऊपर कंडक्ट करबे सिस्टमैटिक स्टडी करले सेटा को हम गोटे रिसर्च बोली कहबा सो एवं आदरा कोन करबो ना यू हैव टू रीच एट ए वैलिड कंक्लूजन ता माध्यम रे तुम गोटे वैलिड कंक्लूजन ने रीच करबो है ना some conclusion रे पहुंचीबा बा रिजल्ट दैट इज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च सो रिसर्च हमें अनेक समय कहूचु साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक सोशल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च हमें अनेक समय कहूचु बट हाउ ए रिसर्च बिकम साइंटिफिक केमिति गोटे रिसर्च हम साइंटिफिक हैला बोली कहबा हैं जदी if your study follow a method or logic in investigation यदि इन्वेस्टिगेशन समय तमे गोटे मेथड को फॉलो करछ if you follow a method you can claim that your research is scientific scientific research engages in search into one chosen subject with the aim of
reaching at a valid conclusion or to add some existing knowledge. Add some existing knowledge. Then validity of your conclusion would depend largely on the methods that you have followed in your research. है ना तेणु वैलिडिटी ऑफ रिसर्च दैट डिपेंड करे एवं जदि तुमे गोटे राइट मेथड चूज करिछ इन योर रिसर्च देन आमे ताको कहि परिबा जे इट इज ए साइंटिफिक रिसर्च. So chosen subject here in research, chosen subject is important, and that is a tip, deciding the topic of research. Chosen topic कहले deciding the topic of research कौन टा topic तुम्हें पढ़ेगा है ना. So research topic or selection of a research topic is very important, and then after selection then the theoretical understanding of that say topic of theoretical understanding is also important. Theoretical understanding. So on the basis of a fact, what is topic को what is subject नेला परे you can use a fact, and a fact is the basis of observation which is empirically verified. Fact टा गोटे कौन is an observation that can empirically verified. Fact is an observation. Suppose आमे कहूचे man is mortal, एटा कौन एटा गोटे observation. मनुष्य मरणशील तुम केमती जन कहला इट इज ऑब्जर्वेशन माध्यम रे. तेणु मैन इज मॉर्टल इज ए फैक्ट. जे मनुष्य जन्म हो से मरिबो एटा गोटे फैक्ट. तो से फैक्ट हम केमती पाइले बाय थ्रू ऑब्जर्वेशन, एंड दिस सो फैक्ट आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एम्पिरिकल वेरीफाइड, एंड दैट बिकम ए एम्पिरिकल वेरीफाइड फैक्ट. सो बाय दैट वेरीफाइड फैक्ट यू एबल टू कंस्ट्रक्ट एन एब्स्ट्रैक्शन. ता द्वारा ता माध्यम रे तुम गोटे प्रिपेयर ए कंसेप्चुअलाइज concept or prepare a frame of reference, and you can sum up the facts in the form of empirical systematic generalization. तुम generalization reach कर परिबो है ना. Then come to the point of validity है ना. common sense analysis माध्यम रे तुम गोटे valid result रे मध्य you can reach at a valid result. valid result रे मध्य तुम reach कर परिबो. तो research is not always what you would call scientific. किंतु research सब बड़े scientific और सेमती किसी माने नहीं है ना. कि read कहउचंती जने read sociologist read कहउचंती ते it is not necessary that research always should be scientific. It may be limited to gathering useful information. एटा केतटा useful information हमको देई पारे. एटा gathering गोटे scientific हेई पारे बा न होई पारे. So on that basis, so that is what is we know research. Then research, there are various types of research. We may come across different research which may be theoretical, while some other may be very practical. So we know that irrespective of the fact that research is a scientific, theoretical, or pragmatic, it has a methodical and make use of established research method. एबे जो established research method अछि आमे ताको यूज करि थाउ पारो. So mere use of research method would not make your research scientific. केवल research method use कले एटा scientific होबनी. It would be scientific when you would deal with concept, theory, theoretical discourses. एटा केतेबेले साइंस होबो ना सेही रिसर्च माध्यम रे तमे यदि concept build करलो बा गोटे theoretical theory build करलो है ना, बा ता द्वारा गोटे theoretical discourse हला. Suppose अनेक रिसर्च करा जाउची, न्यूटन रिसर्च कले एवं से लॉ ऑफ ग्रेविटी पाइले है ना. सो सेठी कोन हला दैट बिकम ए रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हला. काहेकि ना आफ्टर रिसर्च ही कम आउट विथ सर्टेन रिजल्ट. दैट कोन ना गोटे कांसेप्ट देले ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, माध्याकर्षण शक्ति गोटे कांसेप्ट देले एवं तार गोटे थ्योरेटिकल डिस्कोर्स तापर हला हैं गोटे कांसेप्ट देले हला. कांसेप्ट बिल्डिंग इज इंपोर्टेंट इन सोशल रिसर्च. एवं तापर थ्योरी तमे गोटे थ्योरी ऑफ सेमती सोशियोलॉजिस्ट माने गोटे थ्योरी ऑफ विभिन्न थ्योरी ऑफ सुइसाइड देले के सुइसाइड ऊपर हम समते थिला हम सोसाइटी रो समस्या समते जानथले समते करथले. किंतु इट इज डिवाइस दरकाइम हु डेवलप ही कंडक्ट ए रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च बोले हम दो कहता. काहेकि आउट ऑफ दैट स्टडी ऑन सुइसाइड ही डेवलप ए थ्योरी ऑफ सुइसाइड. से एवं सुइसाइड कांसेप्ट को से और डिफाइन करे. सुइसाइड कोन है ना, जे कोन सुडा जे कोन गोटे खाई मर जाउतला से कहतला हम ताको सुइसाइड बोली कहतले.
किंतु से डॉल्फिन सुइसाइड कांसेप्ट को क्लैरिफाई कले है सो ता ऊपर गोटे थ्योरी देले एवं तार थ्योरेटिकल डिस्कशन गोटे हला एवं तार गोटे सॉलिड थ्योरी एक्सप्लेन कले देन ओनली इट बिकेम ए साइंटिफिक रिसर्च ताहले एटा गोटे साइंटिफिक रिसर्च हला बोली हमें कहि पाइ अदरवाइज नॉट then to a research to be scientific it must involve the development of concept theory building a theoretical discourses ए सब को इन्वॉल्व कले हम तो साइंटिफिक रिसर्च बोली की कहि पाइबा okay then let us there are different types of research एवं रिसर्च रा पर्पस कोन एम ऑफ रिसर्च कोन ना रिसर्च रा एम होची इट इज यूटिलिटेरियन इन रिसर्च टू सीक नॉलेज आहरण करबा एवं आमर यूटिलिटी आमर आवश्यकता पूर्ण करबा बाय कंडक्टिंग रिसर्च वी फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम है ना सो रिसर्च मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स गोटे होची बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च बेसिक रिसर्च बा फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च कर परिया फंडामेंटल रिसर्च कर परिया हैं सो बेसिक रिसर्च ता कोन द बेसिक रिसर्च पर्पस होची सोशल रिसर्च रे पर्पस होची कोन ना टू अंडरस्टैंड ए फेनोमेना अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम टू एक्वायर ग्रेटर नॉलेज ऑन दैट प्रॉब्लम एटा होची रिसर्च रे पर्पस तेन रिसर्च ता कोन ना फंडामेंटल बेसिक प्योर और फंडामेंटल रिसर्च बेसिक प्योर और फंडामेंटल रिसर्च हमें ये बेसिक प्योर और फंडामेंटल रिसर्च का कहबा ना रिसर्च ता जेते बेले डील्स विथ व्हेन ए रिसर्च इज कंसर्न्ड विथ प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ फंडामेंटल रूल्स और एम्स ऑफ अचीविंग नॉलेज ऑफ इट्स ओन साइड है ना जदि कौन सी रिसर्च ता निजे से कौन सी नॉलेज हासिल करिया पई चेष्टा करथिबो बा गुटे फंडामेंटल विषय रे इटा रिसर्च होथिबो बा गुटे कंसर्न विथ द प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स विषय रे होथिबो ताहला हम ताको गुटे बेसिक रिसर्च बोली कहला और अचीविंग नॉलेज सपोज जेंति हमें कहबा न्यूटन कर से जो रिसर्च ता सेटा को हमें कहि परिबा गुटे बेसिक रिसर्च बा फंडामेंटल रिसर्च हां it pertains to quest for knowledge about a phenomena without concern for its practical use का practical use हो कि न हो किंतु एटा कंसर्न करबा टू एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज एक्वायर करिया पे जेते बेले स्पेसिफिक करे ताला हम ताको बेसिक रिसर्च बोली कहि परबा हां बा फंडामेंटल रिसर्च बा प्योर रिसर्च बोली कहबा सो प्योर रिसर्च कोन करे ना सोशियोलॉजिस्ट have generally carried out pure research in order to discover the laws governing social phenomena गोटे सोशल फेनोमेनन को को लॉ टा गवर्न करूची ताको डिस्कवर करबा होची सोशियोलॉजिस्ट मानकर काम तेनो सोशियोलॉजिस्ट माने प्योर रिसर्च कैरी करंती इट इज क्वाइट ऑफन द बेसिस ऑफ इवॉल्विंग नेसेसरी कांसेप्ट एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इट अ प्योर रिसर्च discovers principles and laws principle और law but discover करे है ना प्योर रिसर्च बा फंडामेंटल रिसर्च बा बेसिक रिसर्च गोटे प्रिंसिपल बा लॉ को डिस्कवर करे बट अप्लाइड रिसर्च डिस्कवर्स वेज ऑफ अप्लाइंग देम टू सॉल्व प्रॉब्लम अप्लाइड रिसर्च हमें का कहबा ना अप्लाइड रिसर्च ता होजी डिस्कवर करबो वेज एंड मींस टू अप्लाई दिस नॉलेज टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम गोटे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई से लॉ को केमती अप्लाई करा जाय परिबो ताकू डिस्कवर करे एवं अप्लाई करी तार सॉल्यूशन करा जाय परिबो ताहले आमे ताकू अप्लाइड रिसर्च बोली कहबा है ना अप्लाइड रिसर्च इज दैट रिसर्च व्हेन व्हिच डिस्कवर्स वेज ऑफ अप्लाइंग दिस नॉलेज टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स है ना सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई जेतला तार एप्लीकेशन एस्पेक्ट हमें देखिबा सेटा को हमें कहि परिबा that it is applied research okay so sociologists find out how one rehabilitate criminal and control their deviant behavior है ना केमती सोशल there are crime is a problem in society तेनो हमें तो crime से माने how can we rehabilitate a criminal or control their crime को हमें केमती कंट्रोल करिबा है ना सी थ्योरेटिकल नॉलेज को जदि हम अप्लाई कलु एठी ताहले ता तो माध्यम रे जे सॉल्यूशन हे परला ताहले हम त कहि परिबा एटा गुटे अप्लाइड रिसर्च बोली कहि परिबा
सोशल प्रोब्लेम व्यतीत सोशल प्लानिंग हमर सोशल लेजिस्लेशन सोशल हाइजीन ये सब क्षेत्र रे आमे मध्य अप्लाइड रिसर्च रा यूज कर परिबा वी कैन यूज अप्लाइड रिसर्च इन दिस फील्ड ए सब क्षेत्र रे आमे अप्लाइड रिसर्च रा व्यवहार कर परिबा ओके देन डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कहले आमे कोन बुझछु ना डेस्क्रिप्टिव रिसर्च describes a social situation descriptive research normally used to describe a social situation गोटे social situation को describe करिया पई हमें social events हो social situation हो बा गोटे social structure हो गोटे social system हो एको describe करिया पई जो research conduct करा जाए ताको हमें suppose हमें गोटे बंडा लाइफ ऊपर गोटे करिवा research बंडा मानकर लाइफ कोन बंडा मानकर लाइफ सिस्टम रिलीजियस सिस्टम ताको describe करिया पई जो हम research कलु ताल सेटा को जो descriptive research है ना its main purpose is to describe the problem or to describe the state of condition as it exists जो अवस्था अछि सेही अवस्था ताको describe करिवाटा को होची हमें descriptive research बोली कहउछे हां एटा को मद ex post facto research बोली मद को जाय पारे descriptive study एठी researcher has no influence on the variable ऊपर आर किछि नहीं कन ई खाली ओनली जाए एवं सिचुएशन टा describe करे है ना एवं दे कैन रिपोर्ट ओनली व्हाट हैपेंड व्हाट इज हैपनिंग सपोज हमें बंडा लाइफ को ऊपर सोशल लाइफ ऊपर पढलु हमें खाली जीवु सेठी बंडा माने कोन करउछन्ती कोन घटुछ केमदी घटुछ तो डिस्क्राइब करू हमें ओ ताको इंटरफेयर करिवार हमरो किछि नाही से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रे देन एनालिटिकल रिसर्च रे कोन रिसर्च हैज टू यूज रिसर्चर एठी फैक्ट और इंफॉर्मेशन जहां अछि ताको यूज करिवो एनालिटिकल जो फैक्ट और इंफॉर्मेशन अछि ताको से एनालिसिस करिवो एनालिटिकल रिसर्च रे analyze them to make a critical evaluation of the material एवं कहीं एनालिसिस करिवो एनालिसिस करिवा द्वारा सीधा को इवैल्यूएट करिवो एनालाइजिंग इट विल इवैल्यूएट दिस ताको इवैल्यूएट करिवो ना तेनु सेटा हला तार पर्पस carefully collected fact and figures when related to other variable present in entire body of data reveal a significant general meaning एवं ताको एनालाइज करिया द्वारा हमें तादर गुटे जनरल मीनिंग पाई परिबा एवं जाकी किछ करियो कारण हमें एमटी जानि चाहिए द फैक्ट एंड फिगर्स सेज नथिंग फैक्ट एंड फिगर्स themselves do not say something हैला दे हैव मेनी क्वालिफायर्स फैक्ट एंड फिगर मेनी क्वालिफायर लाइक इफ वर्ड्स इज उक्तिबो एवं वेरीफाइंग विभिन्न सोर्स अछि स्ट्रक्चर अछि तेनो एनालिसिस नीड व्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स तेनो एनालिसिस माने हमें से एनालिसिस माध्यम रे हमें से व्यू फैक्ट और फिगर को व्यू करिया तेनो एनालिसिस एंड डाटा को एनालिसिस करी हमें तादरु इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी परिबा देन एम्पिरिकल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एम्पिरिकल रिसर्च concerned with experiences or observation it is a data based research coming up with conclusions which are capable of being verified by further research or further observation ताको verify करा जाय परिबो हां तेनु एटा होची कोन एम्पिरिकल रिसर्च ता रिलाइज ऑन द एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस अनुभूति एवं पर्यवेक्षण ऊपर निर्भर करे एम्पिरिकल रिसर्च जेमदे हमें थ्योरेटिकल लॉ ऑफ ग्रेविटी ऊपर जो स्टडी करले सेटा को हमें ओडे एम्पिरिकल रिसर्च बोली कह परिबा it is data based research एवं एटा कंक्लूजन ओडे पहुंचिबो एवं जो कंक्लूजन को पुनी मध्ये वेरीफाई करा जाई परिबो सपोज हमें जेमदि कहलु वाटर कंसिस्ट ऑफ H2O एटा एबे मध्ये वेरीफाई करि परिबा जे प्रकृति रे वाटर प्रकृति रे H2O कि नाही एबे मध्ये वेरीफाई करि परिबा तेनु एटा गोटे होची एम्पिरिकल रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कोन इट इज क्वालिटेटिव कोडा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ता क्वालिटेटिव which became useful in formulating hypothesis exploratory research टाकू हमें पुनी hypothesis formulate करेरा हमकु साहाय्य करे एवं टेस्टिंग hypothesis को परीक्षा करिवारे एवं थ्योरी को करिवारे हमकु एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ता साहाय्य करे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च help us to formulate hypothesis or testing hypothesis or formulating theories or testing theories गोटे थ्योरी बिल्ड करिवा एटा को साहाय्य करे The researcher has little or no knowledge of the problem or situation under study and is unfamiliar with the structure of the group under study. But after going through these exploratory studies,
appropriate some persistent phenomena गोटे persistent phenomena को करिवो सब deficiencies गोटे रहिला गोटे system बा corruption in Indian society ए ऊपर जोड़ा करा जो ताको हमें exploratory research बोली कहला है ना corruption जदि हमें वर्तमान करिवा corruption by civil servants corruptions by political leaders incorporate करिवा सेटा को करिवा द्वारा हमें ताको गोटे exploratory study करिवा एवं this exploratory study is quite valuable in social research social sciences and they will give a new ground why these trends of corruption is high among the bureaucrats or the politicians. Then understand the reason. तम exploratory research द्वारा तमे ताकू explore करिवा नुवा जिंस what is hidden within that. Suppose गोटे student honest हला गोटे college रे. So what is the cause behind that? So exploratory research is conducted to know the hidden cause behind a occurrence. Then quantitative research and qualitative research. Quantitative research based on measurement of quantity or amount. Measure or amount. It is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. Quantitative form eta habo. Ebong eta basically based on methodological principles of positivism. Quantitative research. But qualitative research presents a non-quantitative analysis. It is a non-qualitative research, non-quantitative analysis, and concerned with the qualitative phenomena only. A phenomena relating to a involving quality or kind. कौन सोटा गुण को इन्वॉल्व करता है phenomena को suppose आमे कहबा गोटे behavior गोटे type of an individual show a particular type of behavior. What is the reason of his behavior? That is concerned with the quality. So qualitative research is essentially important in behavioral sciences. A behavioral science is very important, which keeps an try to discover the underlying motives of human behavior. जने गोटे situation में particular behavior देखोची, ता behavior देखेबार what are the cause, what are the motive behind that particular showing that particular behavior, and that this qualitative research want to study. Then explanatory or longitudinal research. Explanatory research mainly explains causes of social phenomena. What are the causes of a social phenomena? Tar cause को explain करो. Suppose आमे जल्दी करें dowry. Dowry has variety of causes. So, if we conduct a exploratory research on dowry, then we can find what are the possible causes of dowry. कौन सब causes अछि सबको जानि परिबा. एवं exploratory research ता कौन करिवो ना it will establish the relationship between variables. How one is the cause of the other. केमिति काहेकि झियो मानकर शिक्षा तांको डाउरी पाई दाई ना बा काहेकि डाउरी बढ़ुची ना काहेकि आमे देखुचे झियो माने जते अधिक शिक्षित होउछन तांको पय अधिक डाउरी आवश्यक पड़ुची एई गुडा को जानिया पई आमे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को करि परिबा. What is the relationship cause of juvenile delinquency? काहेकि juvenile delinquency बढ़ुची. Why there is a rape on small girls? So we can go on. A type of study जदि आमे करिबा ताको हमें explanatory research बोली कहबा. Here we will find to the cause. What are the cause? काहेकि आगुरु तो डाउरी हमर नथला एबे काहेकि डाउरी देखा जाउची. आगुरु तो हमरा ए सोशल प्रॉब्लम नथला आगुरु ए प्रॉब्लम ता काहे देखा जाउची. So if we go on detail, then we will find the cause of that research. It is mainly concerned with the discovering causes. Why factor? Why things happens? Why a phenomena occurs? It does not involve comparison. Comparison करने कहीं की घटे दागू पड़े. किंतु longitudinal research कौन करे? It study a problem or phenomena over a period of time. गोटे निर्दिष्ट समय टाइम सिम भितरे या कोटो स्टडी करे longitudinal problem. Suppose for example आमे कहबा the trend of suicide among Indians in different year.
in a particular period, that is a particular decade or a particular year. The trends of farmer suicide in 2000 or गोटे इयर निर्दिष्ट इयर सिलेक्ट करवा से अनुसार पढ़वा सी प्रकार प्रॉब्लम भितर पढ़ा जाए ताको हमें लॉन्गिट्यूडिनल प्रॉब्लम बोली कहो ए रिसर्च बोली की कहो देन एक्सपेरिमेंटल और इवैल्यूएटिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन it deals with the problems cause and effect. Experiment is the most sophisticated way of getting at the problem of explanation. एवं एक्सपेरिमेंट विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट हो पारे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो पारे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट रे जने मैनिपुलेट करि परिबो रिसर्चर मैनिपुलेट करि परिबो से सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट हो पारिबो ऑब्जर्वेशन द्वारा हम करि परिबा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट रिसर्च करि परिबा ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट रिलाय ऑन प्रिसाइज observation and outcome of change that occur in a particular सेटा को हमें करिबा सो एक एक्सपेरिमेंटल दा विभिन्न प्रकार रो ही पारे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ही पारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन ही पारे किंतु इवैल्यूएटिव रिसर्च इट बेसिकली टू इवैल्यूएट ए पर्टिकुलर थिंग्स गोटे निर्दिष्ट प्रकार जिंस को हमें इवैल्यूएट करिया पई ए प्रकार रिसर्च कंडक्ट करा जाऊ इवैल्यूएशन सपोज हमें कहबा what is the गोटे प्रोग्राम रो इवैल्यूएशन प्रोग्राम पढ़िबा हमें सपोज देखुछु जो स्वच्छ भारत होछि स्वच्छ भारत सब सरकार पाइखाना दे दे गला सो हमें ताको इवैल्यूएट करबा हाउ फार पीपल यूजेस हाउ पीपल यूजेस एंड व्हाट इज इट्स तार इवैल्यूएशन कोन गोटे रे जति कि हेला प्रकृति रे सेठी कोन होछि सेटा यूज होछि कि नाही ना वी विल कंडक्ट दैट से प्रकार हेले ताले गोटे नेचुरल सेटिंग रे हमें सेटा को स्टडी करि परिबा तेनो सोशल बेसिकली सोशल वर्कर्स इन्वॉल्वड इन इवैल्यूएटिव रिसर्च हम जो विभिन्न प्रकार सोशल वर्क माने से सब इवैल्यूएशन वर्क करंती इवैल्यूएशन कोन करे हाउ इफेक्टिव इज द प्रोग्राम केते दूर ए प्रोग्राम दा इफेक्टिव ए प्रोग्राम दा हाउ फार यूजफुल फॉर पीपल ए प्रोग्राम दा विल कंटिन्यू और नॉट ए प्रकार क्वेश्चन हमें अराइव करबा through evaluative program में then participatory action research कौन action research basically action research होची is a philosophy on methodology of research generally applied in social sciences and action research seeks to transformative change it seeks transformative change through simultaneous process of taking action and doing research. Action research is a method of systematic inquiry that teachers undertake. Normally, a action research that teacher manango dwara the teacher here act as a researcher of their own practice, and by that they will generate research. Action researcher generate research. Even tangar aim of action research is to learn through action that leads to a person and personal and professional development. ये action दा केमती personal आउ professional development होची ता ऊपर गुरुत्व दे है ना एवं action research is the involvement with the practical issues and action research ता basically practical issues सहित concern होते or problems that arise as a routine in the real world real world रे जो problem आसी सेटा को एवं आर एक्शन रिसर्च रा मेन होची कोन ना इटा एरो गोटे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन थिवो एक्शन रिसर्च रा गोटे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन थिवो इट एम्ड एट डीलिंग विथ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डे टू डे प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सामना करछि ता ऊपर स्टडी करा जिवो एवं इट इन्वॉल्व्स चेंज another characteristic of action research it involves change it also action research is cyclical process it generates possibility for change then further change further stimulate the change then participation practitioners are the crucial people in research their participation is active it action research re participatory research रा active participation दरकार करछि एवं ये एक्शन रिसर्च रा मते विभिन्न प्रकार हे पारे इंडिविजुअल रिसर्च सपोज an individual independently working in a project सेटा को हमें इंडिविजुअल रिसर्च बोली कहबा
Second hoji collaborative research. These are the four types. There are four types of action research: individual research, collaborative research, school-wide research, or district-wide research. These are the four types of action research in found in social research. आम जो action research देखुचे सेटा को आम एटा कहूचे participatory action. कहना here participatory action कहीं तो research करा जाउची ना here the researcher or the teacher act as a researcher, he himself participate with the process. तेणु एटा दुईटा स्टेज रे मध्यम ऐड करे गोटा होची फर्स्ट स्टेज द रिसर्च इज कैरिड आउट एंड सेकंड स्टेज रे प्रैक्टिशनर अप्लाई नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम द रिसर्च जो सेथरु जो रिसर्च जो नॉलेज पाइला ताकू सेथरे अप्लाई करबे ए दिटा होची रिसर्च. Then we complete this. Any question from these types of research? Then we'll go. Go. Sir, I have a question. Sir, अपन जो पढ़ेले क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च सेथिरे क्वालिटेटिव रिसर्च रे कोआ गला जे सेटा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म सेथिरे इंक्लूड हुए. सर सेटा केमिति हुए टिके बुझेबे. क्वालिटेटिव रिसर्च ता एटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च ता इन्वॉल्व करछि क्वांटिटी. यस सर. Quantitative research measurement, quantity, amount is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. जोड़ा quantity थ्रू रे एक्सप्रेस नहीं परिबा ताकू डील करछि. किंतु qualitative research present a non quantitative analysis and is concerned with the qualitative phenomena. एटा गुणात्मक विषय सहित प्रॉब्लम सहित जड़ित. That is phenomena related to involving quality or kind. गोटे जिते रीजन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मु कहली दैट रीजन ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर गोटे पर्टिकुलर बिहेवियर जने गोटे सिचुएशन में शो करूची व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस शोइंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर. ए प्रकार जने बिहेवियर देखार कारण कोन है. सपोज आमे देखुचे गोटे नॉर्मल इंडिविजुअल इज बिहेविंग वेल एट अदर ओकेजन बट एट सच पर्टिकुलर ओकेजन ही बिहेव्स ए क्रिमिनल बिहेवियर. ताक द्वारा आगुर क्रिमिनल इंसिडेंट नथला बट हठात देखेला. So what is the cause of that? सेही टाइप रो जेतेबेले एता ऊपर हमें इन्वॉल्व करू जाने को चाहू सेटा को हमें क्वालिटेटिव रिसर्च की एटा तेनु सेति पई एटा बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर बा बिहेवियरल साइंस रे एटा बेस करी देखा जायता है. इसको लगे ओके सर पॉजिटिविज्म इंक्लूड करूची क्वांटिटेटिव रे. हां सेटा केमिति क्वांटिटेटिव पॉजिटिविज्म कहले ना जेहेतु पॉजिटिविज्म कहले कोन एटा गोटे साइंटिफिक साइंटिफिक तेणु क्वांटिटेटिव टा जेहेतु अमाउंट और क्वांटिटी सहित जड़ित तेणु से दृष्टि हम ताको पॉजिटिव एस्पेक्ट को गोटे पॉजिटिविज्म सेंस रे कहि पाइबा है ना. ओके सर. कहना इट बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म है ना. एटा मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म बा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव इतिबारु हमें ताको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहतो है ना. Quantitative research का based on methodological principle of positivism है ना. पर scientific principle लो positive पर्यवेक्षित हेइथिबारु आमे ताको quantitative method बोली कहूचे. ओके किंतु बिहेवियरल साइंस जेटा ए जे क्वालिटेटिव रिसर्च का एटा जेतु बिहेवियर सहित एटा पॉजिटिविज्म सहित रिलेटेड आर कोन साइंटिफिक कैरेक्टर रहबनी जोटा इंडिविजुअल केस रे हेबो सेटा अन्य केस रे डिफर हेबो किंतु एठी सेटा हबो क्वांटिटेटिव केस रे सेटा हबो नै. सर ताले पॉजिटिविज्म जो इंक्लूड होची क्वांटिटेटिव रे ता ता सेटा इंक्लूड माने क्वांटिटेटिव रिसर्च ता बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म दैट इज द मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल. पॉजिटिविज्म कोन इट इज अ मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल. बुझ परछ कि नहीं. यस सर. तेनु जेतु एटा क्वांटिटेटिव रिसर्च ता पॉजिटिविज्म प्रिंसिपल ऊपर पर्यवेक्षित होची मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल अडॉप्ट करूची तेनु एटा क्वांटिटेटिव रिसर्च बोले हम कहबा. ओके सर. ओके आज्ञा सर. Thank you. Any other question? Any other question? Sir, जो सोशल रिसर्च और सर्वे ए दिटा को सेम थिंग ना डिफरेंट अछि. नहीं सेम बट डिफरेंट. मु कहबी एतर सर्वे तमरा आसीयो मु कहबी
हला सर्वे और रिसर्च भितर डिस्टिंक्शन कहबी है ना ओके हम जीवा सेटा जो अछि हम ताको डिस्कस करबा अछि तमरो सेटा आगु अछि पड़बो है ना सो लेट अस डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ रिसर्च मेथड कर method means there is a research there is a common way of carrying out one's research ता जे भी कैरेक्ट करू तार गोटे कॉमन वे अछि है ना सो in this unit we will talk about that way that common way is known as the method that common way of carrying research is known as the method so research गोटे कहितली जे research गोटे ongoing process and it involves various steps of social research research is one formulation of a problem identification of the problem then formulation of hypothesis then testing of hypothesis then collection of data these are the following steps that we follow so research process रे ए सब को कंडक्ट माने ए सब मेथड को स्टेप को फॉलो करा जाए तेनो मेथड एक्सप्लेन द सबटल रिलेशनशिप बिटवीन this method and methodology. In social science research, the identity of discipline depends largely on methods and its practitioners use. Then social science research रे method कौन practitioner use करूँ research that is very important. And can the methods used that determine the result of research. So methods refers to कौन methods कहले कौन the technical rules adopted during research. बुझ पारछ कि नहीं? It is the technical method कहले कौन the technical rules adopted during research and it define procedure for collection and analysis of data method the procedure frame करे जे how to collect data and how to analysis data केमती collect करिवो एवं data केमती analysis करिवो this knowledge concerning this is called as the method so सेतिपा हम तो कहू methods of data collection there are several methods of data collection and analysis विभिन्न प्रकार मेथड अछि so methods lay down the procedure for a generation of reliable and objective knowledge methods lay down the procedure एटा गुटे lay down करे procedure जा माध्यम रे हमें generate करू reliable data or collect objective knowledge so there is a interface between method and methodology method कौन बुझला it is the technical rules of research the methodology refers to a broad theoretical and philosophical frame methodology is a broad theoretical and philosophical frame into which the procedural rules fit जोटी को से प्रोसीजर रूल रो फिट सेडो का में मेथोडोलॉजी बोली कहू तेनो एटा गोटे ब्रॉड थियोरेटिकल फ्रेम बुझल कि नहीं तेनो सक्सेस ऑफ ए रिसर्च mainly depend on methodology on which it is based गोटे रिसर्च रो सफलता जो मेथोडोलॉजी ऊपर पर्यवेसित ता ऊपर निर्भर करछि तेणु आम से अनेक समय आम कौ रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन ना यहाँ गोटे हूँ ब्रॉड फ्रेम ऑफ द रिसर्च प्रोसेस ए ब्रॉड फ्रेम ऑफ रिसर्च प्रोसेस मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स है ना सो हियर गोटे थियोरेटिकल ओरिएंटेशन व्हिच रिसर्च प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट द चॉइस ऑफ मेथड और टेक्निक टू बी यूज्ड को टेक्निक यूज सपोज आम गोटे डाटा कलेक्शन को इंटरव्यू यूज करियो कि क्वेश्चनर मेथड यूज करिवो कोन करे सेटा गोटे सिलेक्ट करबा रहउची तेनु रिसर्च मेथोडोलॉजी रो गोटे बेसिक एलिमेंट्स होची कोन ना देयर आर तीनटा बेसिक एलिमेंट्स अछि रिसर्च मेथोडोलॉजी रो गोटे होची कांसेप्ट प्रोपोजिशंस और हाइपोथेसिस आउ थ्योरीज कांसेप्ट कोन व्हाट डू मीन बाय कांसेप्ट ये जो तीनटा एलिमेंट्स रहला दैट प्रोवाइड्स अ स्कैफोल्डिंग टू रिसर्च मेथोडोलॉजी ये तीनटा रिसर्च मेथोडोलॉजी वेरी वाइटल so concept is very vital basically you know sociology is a conceptual study ame agru kahi tumaku mu the sociology is a conceptual study so understanding concept is very important not only in sociology but also in social research so concept kono na concept gota hochi mental image concept hochi gota mental abstraction suppose mu कहली जे गोटे भलो पिला एटा गोटे concept भलो पिला good boy, bad boy, both these are the concept.
ତେଣୁ ଭଲ ପିଲା କରେ କଣ that concept we all know. So that is it. So in research we build concept. Research माध्यम रे आमे जेमति आमे कहलो MN श्रीनिवास गोटे कंडक्ट कले गोटे स्टडी एरिया रिसर्च कले एवं आउट ऑफ हिज रिसर्च कम आउट ए concept that is sanskritization संस्कृतिकरण इन गोटे concept आसिला. So building of concept. So through research we build concept. So concept are building blocks of social research. Social research re concept are very important, and concept is a shorthand representation of a variety of facts. Variety of facts. Suppose ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ପିଲା କିଏ ये ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇବ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ କଣ ନା ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ ବୟ. So it is a shorthand representation of a variety of qualities. अनेक गुडे भल गुणर समाहार को आमे शॉर्ट रे कहि देले कोन इज ए गुड बॉय. ओके नहीं. So similarly beautiful, ugly, all these are गुडे concept. All these are गुडे concept सब. तेनु एटा केमते होय ना these bring together through observation and experiences. एटा observation और experiences द्वारा हमें concept डेवलप करू. तेनु concept गुडे होची abstractions of reality. It is not reality. It is an abstraction of reality. Abstraction of reality. Concept. It convey several meanings and impressions. Several meaning and impressions. एटा विभिन्न अनेक प्रकार अर्थ शो करे. So but concept defined according to theoretical orientation of the researcher. ये researcher जो concept डेवलप कला से तार theoretical orientation नहीं की define कला. Concept से दिपाई individual बा researcher specific. Sanskritization को श्रीनिवास जा को जंदी हमको तांकरी कर लाइट रे बुझिया को पड़ियो. है ना. अच्छा तापर कोन ना hypothesis. Concept बुझिला then hypothesis. Hypothesis मु कहितली पूर्व जा it is below and thesis a region theory. Then propositions hypothesis कोन गोटे propositions or a statement or interrelationship among concept. Hypothesis कोन गोटे problem विषय रे गोटे statement कहबा द्वारा हमें कहि परिबा. है ना. साधारण जदि हमें कहबा गोटे कंडक्ट हमें बिहेवियरल साइंस गोटे स्टडी कला बेले जियो मान को ऊपर स्टडी कला हम कहबा जियो माने लाजकुड़ी ओ गर्ल्स आर शाय इन नेचर. एटा गोटे hypothesis. एटा गोटे proposition. एटा गोटे एई परिबो हमें एवं तापर रिसर्च करिया जदि रिसर्च करिकि हम देखिबा जदि प्रकृति रे से आतो ताले एटा गोटे थ्योरी हिजो. हां इट इज ओके. एटा प्रूव्ड बाय आवर रिसर्च. So it is in social research methodology take different kinds of hypothesis, and when it is proved it became a theory and disproved it is rejected. Then building up theory. तापरे another concept होची theory. Theory कोन ना theory गोटे set of related concept. केमती as the system of concept and proposition that explain the underlying a situation or a characterizing a phenomena. Then theory kono na theories are systems of concept केतेगुडे concept ର समाहार and proposition or statement केतेगुडे statement ba concept ର समाहार that explains the relationship and underlying principles characterizing a phenomena or a event. सेटा गोटे theory जेमति हमें कहबा theory of suicide. तेणु थ्योरी हो सुइसाइड कोन ना एटा गोटे केते गुडे कांसेप्ट थ्योरी सुइसाइड भितरे दरखाइन केते गुडे कांसेप्ट कहिजंती. सुइसाइड हो जन इंपल्स से इगोइस्टिक सुइसाइड एगुडा सब कांसेप्ट है ना. अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड एगुडा सब कांसेप्ट केते गुडे कांसेप्ट समाहार एंड प्रपोजिशन से कहिजंती कोन प्रपोजिशन काहे कि जने सुइसाइड करछि कोन वाटर ना सोसाइटी individual के suicide करते नहीं, but it is the society who pushes and creates a suicidogenic impulse in the minds of an individual that forces him to commit suicide. So by this way they develop a theory, and it is the theory which attempt to fit together in a logical pattern to the situation. The logical pattern is situation fit करते. Okay, बुझ पारला बे concept कोन
hypothesis कौन है theory कौन हाँ काइंड्स ऑफ डेटा आम जो डेटा कथा कहते डेटा डेटाटा हूँ द फैक्ट्स दैट वी कलेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स और द फील्ड जोटा आम करूँ है ना सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा इन यूज्ड इन सोशल रिसर्च से डाटा को आम साधारणतः दुई भाग व्यक्त कर गोटे हूँ प्राइमरी डाटा गोटे हूँ सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा कौन ना व्हिच आर कलेक्टेड बाय द रिसर्चर फ्रॉम द फील्ड डायरेक्टली जे कला से प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा कौन ना दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेस विभिन्न सोर्सेस बुक्स लाइब्रेरी सब जो कलेक्शन करागला ताको हमें कहि परिबा सेकेंडरी डाटा और ऑटोबायोग्राफी कार डायरी ये सब कलेक्ट करागला सेगुडा को हमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा बोली कहला सो मेथड हम जो मेथडोलॉजी कथा कहू देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड गोटे यूज्ड इन सोशल रिसर्च गोटे हूँ हमर इवोल्यूशनरी मेथड कंपैरेटिव मेथड जो मेथड एंड मेथडोलॉजी कथा मैं कहूली सो कंपैरेटिव मेथड देन हिस्टोरिकल मेथड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ये गुड़ा सब हूँ विभिन्न डॉक्यूमेंट रहा पर्सनल डॉक्यूमेंट बायोग्राफी डायरी लेटर्स ये गुड़ा सब एक्ट एज द सोर्स ऑफ डेटा करे evolutionary method emergence of empiricism in social research that social scientists emulated the biological model in the study of society the Darwin's theory of social Charles Darwin's theory of social evolution found parallels in social science सेटा evolutionary method चार्ल्स डार्विन जो लिखिले थ्योरी ताको हर्बर्ट स्पेंसर से इवोल्यूशनरी मेथड टाको अप्लाई करे सोशल साइंस बा सोशियोलॉजी के तेणु एटा को इट इज आल्सो डेवलप ए मेथडोलॉजिकल टूल और ए टूल टू बिल्ड हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस इवोल्यूशन मेथड टाको मध्य कम्प्लीट it studies the cumulative effect of series of change by analyzing how each change brings modification प्रत्येक चेंज के मॉडिफिकेशन आने ताकू एक्सप्लेन करया पई इवोल्यूशन मेथड को कले एवं तापरे कंपैरेटिव मेथड it is the oldest method in social science used to generate and analyze both kinds of data secondary and primary August Comte called it a reliable and scientific method of inquiry comparison द्वारा हमें कंपैरेटिव मेथड साधारणतः हमें जेतले जानिया पे गोटे जिंस रे कंपेयर करू एवं कंपेयर करी माध्यम रे मध्ये हमें स्टडी करू तेनु सेटा को हमें कंपैरेटिव मेथड बोली कहू दुईटा फेनोमेना भितर हमें कंपेयर करिकि सेटा से मेथड को डेवलप ना से मेथड रे तेनु Boas pointed out that there are several limitations of comparative method अछि तार लिमिटेशन अछि एडवांटेज अछि किंतु however comparative method is also being studied then historical method recognizes the dynamic nature uniqueness and dynamic nature of society and culture the historical information pertaining to an entity a society or an institution reveals a great deal about the nature of its social dynamism what a social entity tar to historical information thibo तेणु हिस्टोरिकल मेथड माध्यम रे हमें कौन करू कलेक्ट फैक्ट बाय गोइंग टू द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड्स सो हिस्टोरिकल मेथड कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड्स एवं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये तो कोड पे पाऊ ना रिकॉर्ड्स डायरी ट्रैवलर्स अकाउंट एगुडा सब हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पाऊ तेणु ता माध्यम रे हम जो स्टडी करू ताको हमें कहू हिस्टोरिकल मेथड बोली कहू देन ए सब जिंस को हिस्टोरिकल मेथड को हमें कोउदरु सब पाई परिबा ना डॉक्यूमेंट्स पर्सनल डॉक्यूमेंट्स बायोग्राफीज डायरीज समुद्र गोटे जने राजा थिले तांको डायरी मेंटेन करछन तांको तो हमें इंफॉर्मेशन पाई परिबा विथ डिफरेंट इंटेंशन डाउट गाइड लिखा जाए सम पर्सनल डायरी इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ वन्स लाइफ ए सब थाए
तमने डायरी राइटिंग तापरे लेटर्स जो एक्सचेंज ऑफ लेटर महात्मा गांधी का विषय में बहुत जिनसे जानि पारू महात्मा गांधी तंकर लेटर महात्मा गांधी टागोर का विषय एक्सचेंज ऑफ लेटर ता द्वारा मध्ये हम सेमानकर पीओपी जानू तापरे विभिन्न पब्लिक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेटा मध्ये उठे हिस्टोरिकल रेकॉर्ड इज पब्लिक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स that also act as the method. So these are the different methods. Then let us come to discuss about historical elements of research design. Research design. Design माने तमे कौन बुझो? साधारणतः डिजाइन माने आमे देखो गोटे जेमते आमे करू घर रो गोटे डिजाइन अछि गोटे ड्रेस रो गोटे डिजाइन अछि आम फेस रो भी गोटे डिजाइन अछि है ना सो सिमिलरली रिसर्च डिजाइन is a kind of blueprint that we prepare before actually conducting research. Actually research को जिबा पूर्व the blueprint that is in our mind about the research is what is known as research design. आमे कोनसे गोटे रिसर्च काम कोनसे गोटे काम करिया पूर्व आमे प्राक प्रस्तुति गोटे करू preliminary preparation and that preliminary preparation is about the thinking about the research process, the objectives to be followed, the hypothesis to be tested. ये सब विषय जो करा जाए ताको हमें research design बोले कहू. So it is a systematically prepared sketch in which way research will be conducted. এটা গোটে sketch mark ता पूर्वरु गोटे sketch mark how to conduct a research. केमिति हमें research conduct करिबा एवं सेटा को कौन कौन प्लान करिबा को स्टेप रे जिबा है ना ए सब विषय को ताहा जड़ित करता है. Research preliminary preparation before conducting a research. जेतु आमे कहिछि पूर्वरु जे research is an ongoing process, it is a complex and complicated process. So in order to enter into that complex and complicated process, we have to prepare ourselves. So that preliminary preparation, selection of methods, methodologies, ये सब जो प्राक प्रिपरेशन ताको हमें रिसर्च डिजाइन बोले कि कौन. सो रिसर्च डिजाइन तेनु हाउ टू स्ट्रक्चर केमते रिसर्च डिजाइन करबा से जो विभिन्न स्टेप्स मु कहितली स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिसर्च प्रोसेस. Structuring a research process is what is called as a research design. है ना? And without preparation, we can't. Research is a gambling work. Without systematic preparation, we will reach nowhere. I mean, कोड भी पहुंच परिवा नहीं. So that's why you have to go systematically, and we have to define the problem. We have to select a problem. आगु हमें ଗୋଟେ problem select करे. कहाँ पर हमें research करिवा एवं what utility will get out of that. कौन utility हमें ताजुर पाएगा. Then defining that problem. After select problem kale you have to define jitele evil durkhaim poverty is dowry suicide upare padile se ago first define what is suicide se ago nije bujhau chesta kale he define the problem what is suicide kon suicide seita preliminary step taku na kale you can move further there confusion hobo है ना. So defining the problem, then reviewing the related literature. तापरे हमें सेही संबंध रिलेटेड लिटरेचर कोन करि जे दुर्काइन सुसाइड पड़ले से सब देशर सुसाइड विषय रे स्टडी कले सब देशर गोटे देशर विभिन्न अंचलर कमिट होतया सुसाइड ऊपर मध्ये स्टडी कले है ना. सेटा रिव्यूइंग लिटरेचर हमें रिव्यू करबा से रिलेटेड लिटरेचर कोन कोन सब अछि से संबंध रे सुसाइड संबंध रे बा अदर संबंध रे वी हैव टू कलेक्ट दैट. देन आइडेंटिफाई द यूनिवर्स कोठी where you conduct your research को एरिया रे हम रिसर्च करबा है ना. आइडेंटिफाई देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस तापरे हमें हाइपोथेसिस को फॉर्म करबा एवं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करला परे आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स. इन रिसर्च देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल आउ इंडिपेंडेंट एज सेक्स एगुडा सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोटा कैन नॉट बी चेंज. तमे को जनक एज सेक्स चेंज कर परिबो तेनु सेटे एज डिपेंडेंट कोन डिपेंडेंट वेरिएबल कोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव टू आकुता को डिसाइड करबा. देन आफ्टर डिसाइडिंग दैट वी कैन गो फॉर ए रिसर्च. आइडेंटिफाइंग वेरिएबल करबा हाइपोथेसिस परे आइडेंटिफाई वेरिएबल देन हम कोन करबा ना सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टेक्निक्स एंड मेथड्स. वी हैव टू सिलेक्ट रिसर्च टेक्निक्स
and research methods. What techniques to be followed, what methods to be adopted, that must be selected appropriate to the problem. Say problem by co research ta co technique ta co method ta will be more appropriate. अधिक appropriate habo, that must be decided. ताको हमें decide करवा दरकार. That is the preliminary steps in social research. Then standardization of research. तापरे research रा standardization हम करवा. We have to make a standardization of research. Then pilot study. Pilot study कौन? Before finally entered into the universe or research, you have to make the pilot study. You have to make a pilot study of the phenomena. Pilot study means prior to going to collect data into the field, a preliminary study of the study area. Say study area upare तुम्हारा preliminary study यदि conduct करो, सेटा को pilot study बोली कहा जाए. कारण pilot study समय तुम अनेक जिन से जानी पड़ेगा. What are the shortcomings? तेणु pilot study करियो. Then तापर जाई final data collection पाई तुम्हें जो. Then collection of data. How to collect data? केमती data collection करियो? What are the collecting methods? कौन technique रे केमती data collection करियो? कहाँ को बैठियो? कहाँ तर data collection करो? इस सब विषय रे you have to decide. Then analysis, tabulation, classification of data. तापर data जो collect करो ताको tabulation करियो, आउ analysis, tabulation करियो, classification करियो, data उड़ा विभिन्न form रे थिबो, ताको classification करियो, एवं तार tabulation करियो. Classification, tabulation परे data analysis करियो. Data analysis करियो. एवं data analysis परे report writing, report लिखियो, a final report. That एगो research report बोली हमें कोई परिवार. तेणु ये सब स्टेप देकरी जदि आम गला सेटा को हमें स्ट्रक्चरिंग रिसर्च प्रोसेस बोली हमें कहबा बा रिसर्च डिजाइन बोली कहबा. रिसर्च डिजाइन विभिन्न प्रकार अछि. तेणु वी हैव टू स्ट्रक्चर द रिसर्च प्रोसेस, then conduct a pilot study, then we have to select the samples. Study sample माने कोन? Sample कहले when हम तो गोटे एरिया vast area नहीं थवा ना, so प्रति इंडिविजुअल को कलेक्ट करबा, it is not possible to contact each and every individual personally. So that then we have to select certain samples. We have to select certain samples from the a number of respondents. हमें select करिबा. Sample माने a selected unit from the universe or population. Vast population नु जो selected unit को तुम study करो, सेटा को हमें sample बोली कहबा. Representative of the whole group. Sample is the representative of a whole group. समुदाय ग्रुप रो जोड़ा representative है ना, तब हमें sample बोली कहबा. एवं sample सही मानक ठू डाटा collection करे जीवो. तापरे हमें report writing लिखिबा. ना? Report writer research report कौन हमें finding पाइले, हमारा hypothesis की से finding टा confirm कला कि न कला. So that will be analyzed in the research report or report writing. Okay? Am I clear? Yes, Any sir. question? Any question? Any doubts? If any, please ask. सर रेकॉर्डिंग गुडा टिके ग्रुप रे पठेले भलो होंते. रेकॉर्डिंग सेटा ऑफिस इग्नो पठेओ बोले है ना. मु तम कहबी तंको सेमन पठे. एकर तो मु कोनी जान ऑफिशियल करछंती है ना. सेंड देबे. देबे. आगे. Any other question? Subhalakshmi, do you have any question? Sir, I have joined for the first time in the class. Sir, I have some problem regarding assignment, sir. And there is a research report to be submitted. How will do that research report? Research report. Yes, research sir. report को write research report. मुझे परे के तरह बुझे देबी होगा ना. ठीक है. Thank you, sir. ये जो प्रोसेस कहली सही प्रोसेस रे करिवो. Sir, there is we have to write a research report of about 3,000 words.
Then how will that we do not know that. So need some help. Research report so କିଛି 3000 ଟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚିନ୍ତା କର research report ଟା କେମିତି ଲେଖିବା that are steps of writing a research report ହେଲା so if you follow the steps then automatically ସେଟା automatically 3000 ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା Sir, that can be 3000 you can write this report based either on a review of related review of literature primary sources. Primary sources ହଁ, ତ ଆମେ ତମର କିଛି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ତମର କଣ କାହା ଉପରେ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି ସେ ତିନିଟା ଟପିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ସ Which one you ମାଇଗ୍ରେସନ ଅଫ select? ଲେବର ହଁ ସେ ଦିଟା ତିନିଟା ଦେଇଥିବ ଯେ ତା ଭିତରୁ ତୁମେ ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ନା ହଁ Yes sir. ଆଜ୍ଞା Yes sir. ସାର୍ ଟପିକ ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଗୋଟେ select That କରିବ is reverse migration of. ହଁ ମାଇଗ୍ରେସନ କରିବା ତମେ ଆଗ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡା କହିଲି ଆଉ ଲେଖିଛ କି ନାହିଁ ଫଲୋ Yes, ଦ sir. ସେମ୍ ଷ୍ଟେପ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋସେସ ଏଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ହେଲା ସେଇ sir, we have- ପ୍ରୋସେସରେ we have- ଫଲୋ କଲେ ସାର୍ You ସେ write କଣ in- ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଲେଖା ହବ ଆଉ ହଁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଲେଖା ହବ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଫଲୋଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଲା ସେଇ ଷ୍ଟେପ ସେଗୁଡା ବାଲା ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରହିବ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରହିଲା ସାର୍ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଫର ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ ଲିଟରେଚର ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଆଇଦର 2 books or 4 research articles published recently on the selected topic of your choice ସେଟା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ସାର୍ କଣ ହଉ ସେଟା ତୁମେ ମତେ କୋଉଠୁ ଫୋନ ପାଇବୁ କରିବ ଆମେ ଶୁଣ ତୁମେ you call me at later on you call me I will explain you how to write this ହେଲା ओके सर थैंक यू okay this is any other question sir namaste thank you Jayashree do you have any question sir ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେନି variable dependent variable independent variable ହେଲା ଦୁଇଟା କହିଲି independent variable age sex ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉଟା cannot be changed ସେଟା ହେଲା independent ଯୋଉଟା can be changed ସେଟା dependent ଆଉ ତେଣୁ ସେଟା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେନି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆମ ପିଲା କି ଆଡ୍ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆମ ରେଭେନ୍ସାର ଆଡ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତ କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମତେ କଣ ପାଇଁ କି ଜାଣେ ସାର୍ ଆମ ଗ୍ରୁପ ରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଡ୍ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଜଣେଇବି ମାନେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଲିଙ୍କ ଟା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ହଁ ଲିଙ୍କ ଟା ତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ସାର୍ ଲିଙ୍କ ତ ଅଛି ଆଉ ଲିଙ୍କରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ନାଇଁ ଲିଙ୍କ ତୁମେ ସେୟାର କଲେ ହବନି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସେ ଯୋଉଟା ଅଫିସ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇଦବ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଲ କିଛି ଥ୍ରୁରେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇମେଲ ଆଇଡି କୁ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆରସି ରୁ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ନା କଲେ ଆମର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ ଜଏନ କରିବାରେ ସେ ଆରସି ରୁ ଜଏନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ ଯାଇନି ବି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଲ ଆସିନି ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାଇଁ କରନ୍ତୁ ଯାଇଥିବ ମେଲ ଚେକ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ମେଲ ରେ ଥିବ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ହେଲା କୋଉ ମେଲ ସେ ଦେଇଥିବେ କଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ सर मु राउरकेला कହୁଥିଲି ଆମର ତ MSO-2 ଟା ସାର୍ ସରିଯାଇଛି MSO-3 ହେବା କଥା ସାର୍ MSO-2 10 କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ MSO see some of the related issues you can ask to the RC ସେଠୁ ବୁଝ ଅଫିସ ରୁ ହେଲା what is the problem ହେଲା ହଉ anyone Pratyush Yes, sir. Sir, Sonali I have a question. हाँ Sir, बोलिए can you hear me? हाँ Sir, କୁହ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି sir ମୋର ଗୋଟେ question ଅଛି sir ଯୋଉ answer କୁ structure କେମିତି କରିବେ ମାନେ sir ଆପଣଙ୍କ approach ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଲେଖିବୁ answer କୁ better କେମିତି ଆମେ ତାକୁ structure କରିପାରିବା ମାନେ structuring the research process or answering a question in the sir answering a question hello
know whether you want to know the structuring the research process that I've recently studied, or you want to answer the question in the exam. What you want Sir, to know? answer the questions. In the exam? Yes, sir. हाँ एग्जाम टा केमती क्वेश्चन तमरा आसुची ताकू से भलिया भाबे डिजाइन करिवो एज पर द लिमिटेशन ऑफ वर्ड लिमिट तमरा अछि तमरा 20 मार्क आसुची 12 मार्क आसुची 6 मार्क आसुची सो अकॉर्डिंगली व्हाट इफ हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली इट वांट टू इट आस्क अबाउट हला को विषय रे पचारि यू एक्सप्लेन द कांसेप्ट एनालाइज द फैक्टर्स और द थ्योरीज रिलेटेड थ्योरी दैट से जो क्वेश्चन संबंध रे जहा थिबो सेमती लिखिबो है ना स्टेप बाय स्टेप बेसी टाइम तो सर वर्ड लिमिट्स टा सर मैच होएनी सर जेति नहीं वर्ड वर्ड लिमिट्स लिमिट थाए हबो काहे ना सी जेति की जाउची तमे यदि अननेसेसरी पळे लिखिबो वर्ड लिमिट एक्सेप्ट है ना तमे यू गो व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन 1 तार मीनिंग तमे स्ट्रक्चर कर देबो खास क्वेश्चन टाको सपोज गोटे पड़सी दरखाइन करो डिवीजन ऑफ लेबर तमे डिवीजन ऑफ लेबर तार मीनिंग आ कोन डिवीजन डिवीजन दरखाइन कोन कहले डिवीजन ऑफ काहे की से थ्योरी देले तापर डिवीजन ऑफ लेबर कोन तार टाइपोलॉजी कोन है ना एगुडा को जदी सिस्टमैटिकली तमे लिखिबो से ऑटोमेटिक हबो तेणु क्वेश्चन टा कौन चाहूची एक्जाक्टली तुम एनालाइज करिवो ताको वार्ड लिमिट रहबो एमती 10 20 बार 10 9 20 50 वर्ड अधिक कम रे किछि फरक नै है ना हबो किंतु तुमे सेही क्वेश्चन टा जहा चाहूची सेन लखी जेमती मो रहली राम आसिला राम गला राम खाइला एमती रिपीटेशन सेटा को अवॉइड करिवो है ना एक्जाक्टली व्हाट क्वेश्चन व्हाट सेटा देखले टाइम वर्ड लिमिट रहबो ओके Any other question? Prasanjit, you have any प्राय question? इम्पोर्टेंट सर सर आपण बीडीपी रे प्राय इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडा आपण हमको बहुत गुडा इंट्रो डाकी देथिले सेमती कॉल करले आपण कहि परिबे असाइनमेंट लिखिला बेले हाँ ठीक अच्छे मत कहब टाइम नहीं कि मत समय दब मुझे फांका समय थे कहबी है आज्ञा ठीक है हाँ तुम मत पचार समय देखी पचार मुझे बतईदेवी टिके है ना ओके आज्ञा प्रसन्नजीत डू यू हैव एनी क्वेश्चन शुभलक्ष्मी डू यू हैव एनी क्वेश्चन थैंक यू सोनाली थैंक यू लेट अस क्लोज ओके सर ग्रुप हमरो गोटे व्हाट्सएप रो ग्रुप बनै दउना हंदी स्टूडेंट माने लेफ्ट करी गेलेनी बहुत खाली बना सर लेफ्ट करी गेले सडनली सब लेफ्ट कर जाउ काटी एंट्री बेले कर ना सार समस्त नंबर सार नहीं गोटे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप चलतिला बनाओ बेले एई विषय तो एईटा आउ डिस्कशन हेई परिबोनी ना स्टार्टिंग ताले ରୁ आरंभ ରୁ ହେଇଯିବ समस्त स्टार्टिंग मेसेज हां मेसेज रे समस्त जहाले असाइनमेंट टा हमको डिपॉजिट दबे को पड़िबो ना एग्जाम हो कि न हो असाइनमेंट तो डिपॉजिट दबे को पड़िबो और सही ग्रुप बना ग्रुप दियो हला जने एडमिन रे ग्रुप बने मेसेज समस्त के नंबर को मेसेज कर दे क्लास चला तार एडमिन Vimos a nadie ahí, ¿sí? Hoy se lo va a